feminism to me is humanism. और मुझे आगाही है कि फेमिनिज्म के डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है और you know to in my view you need to own humanism to own feminism as well. जब हम लोग इंसाफ का जिक्र करते हैं ना तो आप मुझे लग रहा है कि हम लोग फिर फेमिनिस्ट होंगे. It's about believing that men and women are equal human beings who own the same rights and who deserve mutual respect in all cases. कि वो एक तरफ से जब मैं पाकिस्तान में certain चीज़ का push करती हूँ कि हाँ ये western agenda की बात है और जब मैं फ्रांस में एक certain agenda push करती हूँ वो कह रही है ये brainwashed हो गया. So you're always wrong. Okay, you know if I have learned कि जो एक चीज़ मैंने सीख लिया इतने सालों से वो ही है कि इंसान है. In the joy or in the worst. हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम. जहाँ भी हैं आप यकीनन कोशिश कर रहे हैं माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए और यही फेमिनिस्टी का विजन है, मकसद है. और आज भी इस स्पेस में आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून हैं जिनके नाम का मतलब ही ये है कि वो बहादुर हैं. तो ये वैलेरी खान है, फ्रेंच पाकिस्तानी पश्तून एक्टिविस्ट, सुपर मॉम. वैलेरी बहुत शुक्रिया आपके आने का और बहुत शुक्रिया ये भी कि आप पाकिस्तान में रह के काम करती हैं बिल्कुल पाकिस्तानी खातून की तरह. आप हमारी नेशनल भाभी भी हैं और हमारी दोस्त भी हैं. तो बताइए इतने सारे जो आपके फेसेस रहे हैं तो अभी जो वैलेरी खान हैं in 2022 when you look back, so how would you like to define yourself, describe yourself, one word or one sentence or too many words or too many sentences, whatever you think that now this is Valerie Khan. मेरे लिए सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और इंसान हूँ और इस इंसान का मेरे लिए खुशकिस्मत हो गया तो मैं एक शुक्र वाला करने का इंसान भी हूँ. और दूसरी बात है इस शुक्र करने के साथ मेरे लिए मैं कम करने वाला इंसान हूँ, कम करने वाला औरत हूँ, मोहब्बत देने वाला. I like people. और मेरा ख्याल है मैं इंसाफ देने वाला का औरत भी हूँ. हमेशा मुझे शायद मैं हर वक्त नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं गलती भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जब मैं मेरी जिंदगी में मैं दूसरे के साथ इंसाफ बेइंसाफ ना करती हूँ. हमेशा ये है. तो वैलेरी और एक और मैं आपके एट्रीब्यूट्स में से एक में ऐड कर दूं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और क्विक लर्नर हैं. चूँकि मैंने देखा है ना जिस तरह आपने उर्दू सीखी है, पश्तो सीखी है, वाह. और फिर पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया पेट्रियार्कल है लेकिन हमारा जैसा पाकिस्तान में रह के होता है कि जो बाहर है, जो यूरोप है, वहाँ पे तो औरतों के बड़े मज़े हैं. सिर्फ हम उनके कि उनको तो बड़ी आज़ादी है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता. प्रॉब्लम मतलब एक वैसे जनरल है, औरतों को क्या प्रॉब्लम है, इतनी आज़ादी तो है, क्योंकि वो आज़ादी को सिर्फ उनके ड्रेस कोड में देखते हैं. ओ ये तो ये क्या, ये तो कोई सारी दुनिया को कोई फंडेड एजेंडा दे दिया गया है कि ऐसे ही बात करो. अभी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों का भी यही होता है कि नो ये गेम कोई और है, ये वायलेंस की बात, अब्यूज़ की बात, इनजस्टिस की बात NGOs की फंडेड रिपोर्ट्स में होती है. वैसे सब कुछ ठीक है, कभी कभार तो हो ही जाता है, हर से गलती हो जाती है, इस तरह लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं. तो आप बताएं, क्योंकि सिंस यू हैव seen, experienced, and you're part of like two different cultures and societies, rather more than two cultures, because there is no single Pakistani culture, and there's a Pashtun culture, and there is our NGO culture, and there is, so there are many subcultures as well. So knowing all this and while experiencing all this, how would you like to define feminism? तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि फेमिनिज्म टू मी इज ह्यूमनिज्म. और मुझे आगाही है कि फेमिनिज्म के डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है
or in my view you need to own humanism to own feminism as well. जब हम लोग इंसाफ का जिक्र करते हैं ना, तो आप मुझे लग रहा है कि हम लोग फिर feminist होंगे. It's about believing that men and women are equal human beings who own the same rights and who deserve mutual respect in all cases. Now, that doesn't mean that from a gender perspective, from so many perspectives, हमने बहुत जिक्र किया ना कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं है ना, वो तो इतने कहानी है एक इंसान के साथ एक सफर जिंदगी के गुजर करने के लिए है ना, और multiple adventures मिलते हैं जिंदगी के लिए. So I guess we also have a very personal and diversified experience of feminism always. And या मर्दों हो या ख़वातीन का हो, it's also a lot about learning and unlearning. और अभी तक मैं unlearn करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग भी molded है ना with bias. It's a mixture of biased and opportunities and capacities to understand and also a lot of misunderstanding. तो ये आसान काम नहीं है. तो feminism to me is humanism, and I think to be a feminist you also need to agree that you're going to learn and unlearn. That's because there are so many, power struggles and so many things in there. And that's interesting because, there is a very, which is not only from men, actually, what do you call that? Conflictual definition of feminism. You have to be against. और मुझे लग रहा है कि feminism is not about being against men. It's about being against injustice. That's very different. Exactly. तो मुझे लग रहा है कि एक feminism एक smooth सफर भी हो सकता है जब आप शुरू में clear है कि ये humanism की बात है. Okay, and I've been blessed in the sense that I've met a lot of men and women who are clear on that. तो फिर जब तक इस जागरा का नहीं आ रहा है ना, इस violence तशद्दुद का perspective नहीं हो रहा है, already it's easier. And then you deal with the external jagra ना, जो के वो करे कि नहीं ये वो ये वगैरह. But that's how I would define it. And the moment you become a humanist, the moment you become a feminist, you then understand how certain groups in the society are more, subject or vulnerable to certain vulnerabilities. No? और इस vulnerability का cross sections भी आ जाते हैं ना, intersections भी आ जाते हैं. For example, मैं एक फ्रांसीसी औरत हूँ, what people call white, which to me is very relative because 3 generations down the line, if I go in a place which there is far more sunlight, शायद मैं इतने सफेद नहीं होंगी ना, ठीक है? तो that's a very temporal dynamic. लेकिन being from the western part of the world, मैं भी समझ सकती हूँ कि मेरे privilege क्या है, एक context के लिए, ठीक है? और मेरी disadvantage भी क्या है दूसरे context के लिए. And I think you also need to be aware of that. Being Francesi has, what do you call that? Allowed me maybe to get away with certain things in certain contexts. जो कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए शायद नहीं हो सकते थे. और दूसरी बात है, at certain times people are attacking me because of that. Not many, honestly speaking, this is a very tiny minority. लेकिन ये भी है ना. Similarly, जब मैं फ्रांस में जाती हूँ, there is a kind of admiration for this French woman who fell in love with this Pakistani man, very orientalistic kind of kahani, because, of course, if you go to Pakistan, it's because you fall in love with someone. It cannot be linked to any intellectual dynamic, no? From a male. Love has nothing to do with intellectual dynamic. Okay, so I mean, I like the way it's being super. I mean, काफी फ्रांसीसी लोग मेरा है काफी बॉलीवुड के तरीके से देख रहे हैं ना कि वो So I mean, all the fact that you don't only fall in love with someone because of it's okay, it's an emotion, it's a sentiment, but you also have all those intellectual correspondences and struggles and discussions that explain the whole story, right? We my husband and I, we were both socialists, we were both Democrats, we were both humanistic. तो वो ये सारी चीज package के अंदर आ जाता है, no? Basically. And so from a French perspective, it's the same. If I am, so basically in Pakistan, you would say,
and I think comparatively speaking, Pakistanis are actually more open than the at some point, no? कि वो एक तरफ से जब मैं पाकिस्तान में certain चीज का push करती हूँ वो करी कि हाँ ये western agenda की बात है और जब मैं फ्रांस में एक certain agenda push करती हूँ वो करी ये brainwashed हो गया so you're always wrong okay so Truth is somewhere between and nobody knows the real yeah, story. या वो अपने लेंस से देखते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है and I like this compliment rather कि पाकिस्तानी जरा ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, ज़्यादा ओपन हैं. लेकिन वेलेरी ये भी है ना कि आप हमारी भाभी हैं. When women do the same तो थोड़े इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते. वो मुश्किल वो ज़रा ये हमें अच्छा लगता है कि एक प्यारी सी फ्रेंच लड़की अब इधर आ गई है. और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन प्यारा सा फ्रेंच लड़का अगर आ जाए तो थोड़ा ज़रा फेमिनिज्म का टेस्ट हो जाता है. For sure. And तो यही है ना कि आप patriarchal dimension को करते हुए देख रहे हैं. That's the reality. मैं आपको मैं वो सबको फ्रांसी में बता रही हूँ. मेरे सबसे सेफ्टी नेट यही है भाभी होने का. मैं भाभी के वजह I don't need, I always felt very secure in Pakistan because of the baby thing. Absolutely. पाकिस्तान में ये कि हम फौरन रिश्ते बनाते हैं ना बाहर तो फर्स्ट नेम तो वो भी ये है ना कि भाभी आंटी पी चाची खाला मतलब हर किसी को जो है ना कोई रिश्ते में वो बेचारा हैरान हो जाता है कि मैं आपका चाचा कैसे हो गया. तो ये है. ओके तो ये तो हो गई थोड़ी सी बात फेमिनिज्म पे. लेकिन ये जो आपने बताया कि ये जो सफ़र है उसमें बहुत से मल्टीपल एडवेंचर्स हैं एक्सपीरियंसेस हैं और बट यू आर सच अ ग्रेट अचीवर और अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने और भी करनी है. तो इसमें कोई कहते हैं ना वो ब्लॉक्स भी आपको कभी कभार मिले होंगे, बैरियर्स भी मिले होंगे, चैलेंजेस तो होते ही हैं. सो वुड यू लाइक टू शेयर 3 biggest challenges or barriers, maybe of gender origin or maybe of multiple origins, because it is always a mixture of determinants. So what would you like to share, and if you could tell us how did you address them, are they over or you still face them, so that younger people, especially younger women, can learn from you and unlearn from you as well, as you say that unlearning is a part of learning. So 3 biggest challenges. The biggest, सबसे पहले actually I think your biggest challenges identify करने से पहले ये मेरी खुशकिस्मती हो गया कि हमारे पास एक ज़बरदस्त family support था. तो मुझे लग रहा है कि इस family support के साथ वो challenges overcome करने के लिए it's much easier ना. बगैर family support ये बहुत मुश्किल है. तो ये भी एक reality है. सबसे पहले मुझे लग रहा है कि I'm not a politician and I don't intend to be. So it's also about and it's of course politicians have certain interest. So to align what you want to do, matlab, as an activist, I like a certain comfort of living, of course, लेकिन मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ. I could never promote a cause just because I don't, if I don't believe in this cause. Do you understand what I mean? You can, मुझे करोड़ रुपए को मैं छोड़ सकती हूँ जब मैं इस cause का believe नहीं करती हूँ. I can't. It's not. It's really true. I can't. तो मुझे लग रहा है कि जब आपके साथ इतने दिल से ना बात कर रहे हैं, सिंसियरिटी कहते, 2 चीज हो जाता है. सबसे पहले I think कि some people may see you as a threat because sincerity is a big power. Because you can't be bribed, you can't be blackmailed, you can't be, you get my point. It's strength, it's ताकतमन की है basically. और मैंने वो, whenever I talk to young people, mentoring के लिए मैं ये करने, और ये मेरे तरफ से नहीं आता है. मुझे याद है कि Acid Survivors Foundation establish करने से पहले मैं बांग्लादेश में गया एक मॉडल स्टडी करने के लिए ना बांग्लादेश में, और उधर एक औरत था, and I asked her, if you had to give me 3 advice, what would it be?
And she was telling me first, do not cheat, do not lie, or emat kijiye, and work very hard. Or ye wala teen alfaz, which were already in my education, but I remember her, telling me. Okay. And then another French woman, Buzur Wala, told me, whatever adversity comes to your life, always focus on what is the most important in your life. The rest shall pass. और तो मैंने वो हर वक्त हमारी जिंदगी अभी तक मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ, लेकिन ये वाला चीज जो कि basically you were talking, NGO environment वगैरह वगैरह, I have never been a slave of the donors and I have never been donors dependent. If I don't believe in a program, या मैं डोनर्स को मुझे देख रहे कि ये कर लेंगे और मुझे लग रहा है कि ये एथिकल नहीं है, एथिक नहीं है, मैं फिर इनकार करती हूँ, and I have refused to apply in some fundings because of that. I'm very clear. मुझे when I work for the best interest of Pakistan. I do not work against Pakistan. सबसे पहले ये मैं very clear हूँ. दूसरी बात है, I am very sincere and I work for women and children. I don't have any vested or double agenda. ये मेरी हुई में नहीं है, मेरी personality में नहीं है. I'm a very clear, straightforward person. लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ये चीज नहीं समझते हैं. I think in their mind it would be too good to be true. Do you get my point? और अभी तक देखते हैं क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, they can't believe this ना, असल एजेंडा क्या होगा, वो जो conspiracy theories होती हैं. Exactly ना. और ये अफसोस की बात है ना, क्योंकि सबसे पहले मुझे लग रहा है कि if they were very informed, actually they should know कि हमारे एजेंडा क्या है. हमारे एजेंडा very सीधा सीधी बात है, बच्चों के तशद्दुद और बच्चों और ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ काम करने का, बस खत्म. ठीक है, I'm very clear. The rest, it's not my expertise, it's not my field, and I let other people take care of it. But तो एक तरफ से मैं ये सच बताती हूँ कि एक तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिल जाते हैं इस वजह से, क्योंकि लोग को पता है, और मैंने ये अपने सुन लिया ना पुलिस से, जजेस से, हुकूमत से, कि हम लोग आपके साथ काम करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पता है कि आप ऑनेस्ट है और आप काम करने वाला औरत है. लेकिन कुछ लोग है कि वो देखें कि वो how can she get the work done. और मैं सीधी बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग हिम्मत करते हैं और हम लोग फोकस एजेंडा के ऊपर काम करते हैं. If you do everything, you do nothing. So I guess ये वाला है ना mistrust, I would say, that you would have, frankly speaking, I think you would have that anywhere in the world. People feel nervous about success, no? You and I, we endorse success. और दूसरी बात है, इस सक्सेस का ये समझने का जरूरी कि ये एक औरत का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं. हमारे पीछे एक पूरा टीम है, मेंटर्स भी है, टीचर्स भी है, और मेरे आखिरी सांस तक में ये एक्नॉलेज करूंगी कि हमारे साथ कितनी ख़वातीन, कितने लोग कोलैबोरेशन किया और ताउन के साथ इसी वजह हम लोग ने फायदा किए ना पाकिस्तान के लिए. तो I think at the end of the day, आप अच्छी दिल से और तरीके से काम कर लेंगे तो मैं I'm a believer, I have faith, तो खुद आपके तरफ होंगे. It's okay. अच्छा वेलेरी, चूँकि आप बहुत फोकस्ड काम करती हैं, लेकिन ये जो फोकस भी जो है बच्चों और औरतों, लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को एड्रेस करना, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, एटीट्यूडनल शिफ्ट, बिहेवियर चेंज के ज़रिए, उसकी भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, तो वो भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाता है. हालांकि जिस आपने कहा ना कि यू डोंट डू एवरीथिंग, चूँकि वो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जिसको आप बहुत फोकस कह रही हो उसका भी बहुत ज़्यादा मुझे तो बड़ा स्कोप और स्पेक्ट्रम है, उसमें भी लगता है ओ यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स ना, देयर कांट बी वन मैजिकल रिकमेंडेशन. बट जिसे कहते हैं ना कि वो प्रायोरिटी सेटिंग में अगर आपके पास चॉइस हो कि बस एक काम करना है बिकॉज वी हैव ओनली $1 इन द kitty, वो कहते हैं ना, तो ये क्या होना चाहिए, तो वो क्या होगी? I think I would focus on child protection at an early age. सबसे पहले, क्योंकि हमारे लिए ये बुनियादी
it's kind of the starting points of an intergenerational cycle of violence, Exactly. or जो कि multidimensional हो जाता है. We wouldn't have those male abusers had they not faced certain things during childhood. Yeah, this is coming more and more. सबूत आ रहा है ना इससे. और जब आप child protection की तरफ focus करते हैं, you are basically preventing a further इतने तशद्दुद later का. और दूसरी बात है, मुझे लग रहा है कि that child protection agenda cannot happen without a fundamental rethinking, and that's where I found more feminist also, of gender dynamics, Yeah. of the notion of justice. क्योंकि हम लोग बच्चों को क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दिखाते हैं ना कि so I think to me it's an inherent part, I would say, rebuilding the narrative based on empathy, mutual respect and love. I'm sorry to say, मोहब्बत की इस concept के साथ ये वापस जाने पड़ेगा ना कि इंसानियत और मोहब्बत क्या है, और how do you promote it, ये देखने पड़ेगा कि आपकी indigenous environment में कौन से वाला रिवाज या references है जो कि इस positive concept को feed करता है. क्योंकि this is also a very important aspect ना, जो जब हम लोग मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगी क्योंकि मैं इधर ही हूँ, हमारे सारे बच्चे इधर पैदा हुआ इधर बढ़ते हैं ना. इंसानियत ये कनेक्शन के लिए ये बहुत महसूस है कि मैं इन लोकल वाला रेफरल्स का इस्तेमाल करती हूँ. I don't want to use something which is from New York या Madrid या वगैरह वगैरह. और आइंदा I believe in universalism, but क्योंकि वो हम सबको इंसान है आइंदा. If I have learned कि जो एक चीज मैंने सीख लिया इतने सालों से वही है कि इंसान इंसान है, in the joy or in the worst. और जो मैंने कनेक्शन को कर सकती थी इस इंसानियत के वजह में कर सकती थी. I've cried with women who were about to die, who had lost their children. I've cried with father whose son had gone through the worst. उस बुनियादी वक्त के लिए ना, there is no cultural boundaries, linguistic barriers, whatever. Do you get my point when we really talk about this? So मुझे लग रहा है कि universal commonality हो सकता है, लेकिन वो universal concept आप कैसे translate और contextualize करते हैं ना ये operationals के लिए, that's the beauty of the countries, the provinces, the regions, whatever. और मुझे लग रहा है कि this kind, I would say, of cognitive shift in the narrative of society कौन से वाला बनाना चाहते हैं हम, and then that focus on child protection, I think if we can focus on that already, we will go a long way. So that's a good and effective relevant starting point towards empowerment of children who are going to be adults, Yeah. and that's very interesting. And I think this is one of the most neglected areas of attention. I mean, you are an insider. So what is the resource allocation? I mean, so depressing. What Very is the limited. priority? We all know. I mean, this is not a bashing session but we know the political will. We know how parliament works. So it's very, very, disturbing, and it's a real tragedy because child sexual abuse and exploitation, they are not, this issue is not for breaking news or for creating hype for a limited time on social media. I mean, it has to be addressed very seriously and sincerely. And I don't see that spirit. I mean, this is my point of view. I mean, people like I think you, it's actually, who are very few, they are working. But what about, the government, and what about the government and the state? Yeah, and the state. You know what? Actually, I would nuance that. Obviously, you need to look at the resource allocation in a much wider geostrategic and global dynamic. ना ठीक है, और जब आप दुनिया को देख रहे हैं, जब एक crisis आ जाते हैं
attention जाते हैं सबसे पहले anywhere in the world कौन पे करते हैं बिल खवातीन और बच्चियां Exactly. so they are paying the cost of that in terms of तशद्दुद का आप पता है ना and they're also the one paying the bill because while they are facing वो सबसे बड़ी vulnerability उनकी तरफ आ जाएगा और सबसे छोटा रिसोर्स उनके लिए होगी उनके लिए हमेशा हमेशा और उसमें फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी कि वो फेमिनिज्म की जब बात होती है जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो उसमें एक डिबेट जनरेट ज़्यादा हो जाता है बजाय डिस्कोर्स के क्योंकि वो क्लास एक्ट भी बहुत ज़्यादा है सो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन तो हम दोनों जब तक काम करते रहेंगे वो रहता है वो ये है कि आप इतनी जगह पे आप मेंटरिंग करती हैं आपकी टॉक्स मैंने देखी इंटरव्यूज़ देखे सुने तो आपको कभी लगा कि मुझसे इतने ज़्यादा सवाल लोग करते हैं मगर ये वाला सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया किसी पॉडकास्ट में किसी इंटरव्यू में किसी टॉक में और काश मुझसे ये वाला सवाल किया जाता तो मैं ये इसका जवाब देती सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट very precious question that you wanted to be asked but that was never asked at this forum? Maybe how do I see myself as an old lady? As an old lady, it's very interesting. Pakistan mein, I don't mind sharing my age. Okay, that I have seen. Yeah, I'm fine with that. तो मेरे और लोग भी it's about breaking barriers. तो मैं इतने जवान नहीं हूँ I'll be 50 in 2 years ठीक है और लेकिन मैं अंदर से it's true I सबसे पहले मैं ये acknowledge करना चाहती हूँ कि getting older I feel privileged about this. मुझे मैं सीख रही हूँ उसके साथ और मैं आपको बताती हूँ wisdom या कुछ सुकून भी आ जाते हैं उसके साथ it's a very positive thing. I enjoy the process because I embrace the process. और दूसरी बात है it's true कि people do not dare ना asking how do you imagine your retired life? Okay, so सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि जब मैं रिटायर होंगी हमारे साथ हमारे पीछे जबरदस्त नौजवान प्रोफेशनल एक्टिविस्ट होंगे क्योंकि और वो वाला नौजवान हमारे काम से बेहतर भी करेंगे they're supposed to be better और ये मैं खुश हूँ इस चीज ना I'm not afraid of succession and competition I encourage that मैं welcome करती हूँ और दूसरी बात I think I would be probably living between France and Pakistan enjoying reading I cannot read literature as much as I would like now हमारे पास वक्त कम है तो I would catch up on that and I think I would like to write storybooks for children because I believe in the power of that Pakistan में ये चीज मशहूर है ना storytelling कितने powerful है ये आपके रिवाज में है so storytelling for change I think that's something I would be interested in my rhythm mere marzi ko and do something like that so how it's going to be that's something I would like to do but I would like to retire within 10 years I think at some point I need to say time for others to take it up. So with this, Valerie, I wish you all success and keep shining, keep inspiring, and I look forward to that book if I remain here on this planet. But from anywhere, I will see. I'm an activist. I will manage. I will see. But really, it's a very good idea, to plan your post-retirement life and to mentor younger ones, to celebrate their success and to write stories for children. Thank you, Valerie. Thank you. Shukri.